Thank you for joining us. I'm sure you have brought a lot of values with you. So let's begin this session. So happy Diwali, everybody. Myself, Monica. I am IT professional and life coach, and I help people to master their emotions. And also, I love to empower women because मुझे लगता है कि they really need to be, brought up for the betterment of the society. And in that regard, Vijender is here. He is one of the brilliant leader. He is author of a book, Freshers to Leader. And the rest, I really would like Vijender to introduce yourself. We want to hear from you, about yourself. All over to you, Thank you. Vijender. Thank you, Mona. Big learning like you guys all. Hi, this is Vajinder. I am author, as Mona rightly said, of Pressure to Leader, the book. And I am passionate to teach the aspiring managers and aspiring team leaders to become the real leaders in their life, not just in professional life, but in personal life as well. So that's a brief about me. Tell you a little bit about why I can do that. Uh, I am running 3 companies as of now as director, and have roughly 2 decades of experience of leading team, managing a team size from 17 to 1,000. It's the total FTE count that I've been able to manage. So that is pretty much. Wow, that's wonderful. And how your journey has been through, Vijender, because managing 3 organization, as you said, or itna very broad. I mean, आपका master, your leadership skill when you are managing small chunk of people compared to when you have 1,000 of people, बहुत different skill set है, right? So Absolutely. I really want to know कोई ऐसा experience हो आपकी life में that can insight की how leadership help you to have a breakthrough in your life or maybe your teams. I mean, any such experience we Absolutely. would love to know about. Yeah. So basically, I would put it that way, that keep it simple. Keeping it simple is always helpful, right? होता क्या है ना, हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देख लेते हैं, हमें आसपास लगता है यार ये तो कुछ अलग कर रहा होगा. नथिंग, नो वन डज एनीथिंग अलग. आजकल एक बड़ा हाइप बना हुआ है, समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. ठीक है. Yes. तो एक लाइन में बोलूं तो सिंपल कुछ नहीं है. आपको ये देखना है कि आप अपनी कंपनी और अपनी टीम से 6 महीना आगे सोच सकते हो, ये 1 साल आगे सोच सकते हो, 2 साल आगे सोच सकते हो. दैट्स इट. इन योर ओन फील्ड, right? So you are an emotional handling coach. So in your field, there are many people who actually are emotionally burned out. They are not able to speak up. So when you Correct. think about it, you become a coach because you're thinking, yeah, there is a problem. लोग इशू में बैठे हुए हैं, लोग चैलेंजेस में बैठे हुए हैं. हमें क्या करना है? हमें बस अपना थॉट प्रोसेस लोगों से पहले उनके आगे रखना है, उनको बताना है, डोंट वरीज, आई वाज देयर विद यू. मैं भी यहाँ पे गुजर चुका हूँ, और नाउ आई एम देयर, राइट वेयर यू वांटेड टू बी. Right? The way I manage it is simple. I plan my 6 months and then 5 years. 6 months, 5 years, 6 months, 5 years. That has been my journey. And I'm blessed with good leaders. There were leaders who used to tell me in the early years of my life कि भाई कुछ नहीं करना, ये देख कि कल क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है और पहुंचना कहाँ पे है. उसके लिए क्या करना है? बैकवर्ड प्लानिंग करना. सिंपल बैठ के कॉपी पेंसिल, नो रॉकेट साइंस, है ना. परफॉर्मेंस करो और अपना प्रेशर को हैंडल करो. प्रेशर आता ही नहीं है जब आप परफॉर्मेंस हैंडल करते हो और डेली अपने टास्क मैनेज करते हो, तो प्रेशर आता ही नहीं. मुझे कभी नहीं आया. Exactly. ठीक है. सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, एंड दैट्स हाउ द जर्नी always been. There were ups and downs. There were times when I was also in trouble, when companies were getting wind up and say भैया सब चले जाओ, सब छोड़ के भाग जाओ, इधर हो, कर लो, वो कर लो. And at that point in time as well, I was able to manage zero attrition. Attrition, people would understand, zero voluntary attrition in my team for 1.5 years. So Wow. चीजें होती हैं, Wow. है ना. Right. That tells me कि कितना simple क्या हुआ है अपने चीजों को, because they say ना कि people don't leave the organization. Generally, they leave the manager or the leader whom they are True. associated to. Because that's how आपकी organization की values या system आप तक transform होता है. And then you said it very, very, beautifully कि simplify. I mean, हमें लगता है leadership मतलब पता नहीं क्या सिर पे उठकर आ जाता है और what special person has to do. Yeah. I think you very well said. Focus is what needed. Focus Yes. what you currently have to deliver or how it's connected to the
बिगर पिक्चर। तो Yes, yes, yes. मेरा भी कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस था, लाइक द वेरी फर्स्ट लीडर, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे जितने भी लीडर्स हुए उन्होंने मुझे इसी तरह की गाइडेंस दी, दैट फोकस ऑन योर करंट टास्क इन हैंड, हाउ यू वांट टू मेक इट बेटर एक्सपीरियंस फॉर whomsoever you Yes. are working with. It's not कि लीडर, बट आपका कस्टमर कौन है, राइट? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? So that has to be brought in, और एक सिंपल सी ये चीज करने से things actually start to work. Very well said. और I think even ना I was reading this article by APJ Abdul Kalam, and he said जो आपने बोला ना, एक विजन होना जरूरी है, एक विजिबिलिटी होना जरूरी है कि कहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो बिल्कुल 6 महीने बाद, 5 साल बाद. So that's actually really good. So आपने बोला कि you were able to manage people, attrition भी नहीं हुआ, which is तो मतलब best thing to happen, you know. that is true. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो तो बहुत सरप्राइजिंग था. The people called me, यार तूने करा कैसे? मैंने कुछ नहीं करा यार, I just gave them value. You give them value, they'll stay with you. करेक्ट, दैट्स व्हाट इज नीडेड. तो थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए कि आपके लीडरशिप स्किल्स या स्टाइल है क्या, बिकॉज हर एक का एक लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट होता है, राइट? बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज भी यूज होती है, बट व्हाट इज योर स्टाइल, एज इफ अगर आप शेयर करना चाहो तो. Okay, as I said, I believe in simplicity. So it is to keep it simple and make sure you take care of your people. First, you understand the message from your leadership. Company चाहती क्या है, right? Where company wants to head, right? And then make sure, is it aligned with your personal goal? Let's say company is doing something, God forbid, unethical. And if you are not aligned with that, you should not deliver that to your team. Instead, you speak up, have the courage, टीम के सामने खड़े होकर बोलो भैया चीज गलत लग रही है मुझे, चेंज करो उसको, राइट? लेट्स डू इट दिस वे. दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको लग रहा है अलाइंड है, मेक श्योर यू आर वेल प्लान्ड बिफोर द टीम इज इवन थिंकिंग. दे शुड हैव द टास्क इन हैंड बिफोर कमिंग, एंड देन अलाइन देम टू योर विजन. ईच एंड एवरी स्मॉल एक्टिविटी शुड बी, बंदे को ये फील होना चाहिए, राइट? एंड फील तभी होता है जब आप अंदर से सच्चे हो. आप नकली फील नहीं करा सकते, गॉट टू बी ट्रू. ठीक है, ये फील होना चाहिए कि जो मेरा सीईओ सोच रहा है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, वही मेरा स्कैनिंग वाला बंदा सोच रहा है, वही इंश्योरेंस में जो बंदा किसी को कॉल कर रहा है, ही इज थिंकिंग एज इफ ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी. आप ये अगर मैसेज डिलीवर कर पाए अपनी टीम तक, खत्म, you are done. And that's the difficult part, because we are not dealing with machines, we are dealing with humans and emotions, right? आपको ये बताना है in their tone, in their language, right? I'm यहाँ पे बोल रहा हूँ, there are a lot of things that people will not understand. बोले यार बड़ा simple बोल रहा है, is it practically possible? This is practically possible. I am an example and I've got many people. I'll give you an example. There were 2 people जो अभी मेरे साथ connected हैं. There were many actually who were my subordinates, right? Both of them are currently running 2 big companies. One company is I am a sleeping director. Wow. That guy is running that company. ठीक है, क्यों हुआ? I took care of them at that point in time. Now this is another, a benefit of managing your team well. They are helping me now to outskill. सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए. मैं कहा यार मुझे कंपनी में आना ही नहीं, you got to come in. आप स्लीपिंग डायरेक्टर आ जाओ, मेरे को once a month एक one-on-one आपके साथ चाहिए. So that's how the things grow. So we need to grow each other, grow our environment together. I think this is really insightful. आप बोल रहे थे तो I was creating notes कि आपने कितना सब कुछ शेयर किया इतनी छोटी सी टॉक में. So I'll just brief it out. What I got from you in this talk is एक vision or delivering that vision to your team so that the pieces are well connected. Then you spoke about the courage which you have to. और सब में है वो courage. ये just कि हम undervalue करते हैं. Then you said clarity होना चाहिए so that there is no discrepancy, transparency अपने आप आ जाएगा, right? And then you said कि alignment, that's what you have to ensure कि things are aligned. Every person as part of the organization or the team should feel that he is important part of the whole picture. उसको left out नहीं दिखना चाहिए. Then you also spoke about communication. That things have to be communicated well. I think this is very important. Maybe we can actually discuss a little more on communication. Then you also talk about integrity, which is must. I think nothing can work. Like आप authentic हो तो चीजें अपने आप reflect होंगी आपके behavior पे, and that builds your relationship. That's bringing growth because everybody is here for growth. अगर कोई organization join करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है? या तो money growth चाहिए
चाहिए या स्टेटस ग्रोथ चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए. So Yes. everybody is looking for the growth, and I think that's what you have been taking care for everybody, and that's the relationship has built. Networking automatically hoga when you have all these things in picture. Awesome. I mean, I think I'm loving the conversation now, the way it's going on. एंड लाइक ये सब चीजें अविजेंद्र, आपको नहीं लगता कि ये हम डे टू डे करते हैं, बट लोगों को लगता है यार ये तो कुछ स्पेशल स्किल ही सीखना पड़ेगा टू बिकम अ लीडर, बट कहीं ना मैं बता कहीं रहा क्या हूँ. लीडरशिप. या प्लीज गो अहेड. हाँ हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट. हर घर में एक लीडर है, ठीक है, हर घर में एक लीडर है, कोई देखता नहीं है उसको. एंड दैट लीडर इज अंडर वैल्यूड, आई टेल यू. राइट, आज की डेट में मीडिया इज ट्राइंग टू नो वैल्यू अगेन, बट दैट इज द अनसंग हीरो. Everyone has their mother, their wives, their sisters out there at home. They करेक्ट. are real leaders, to be honest. My biggest inspiration is my wife, to be honest. वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. मुझे पता है यार, she is a working woman as well. पता नहीं कैसे magically she manages everything. I used to observe her. जब शादी हुआ नया नया मुझे लगा बड़ा चैलेंज है यार, मुझे मैनेज करना पड़ेगा. इसलिए other way around, literally other way around. When I observed it, जो मैं ऑफिस में कर रहा हूँ, आधी चीजें मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, बता भी नहीं रहा, चुपचाप से सीख के जा रहा हूँ. वाओ. Right? They are managing the house, they are managing your finances, they are managing. आप कुछ भी लाके दे दो, they will handle that. उसी में पूरी फैमिली को एडजस्ट करना है. घर भी क्लीन है, आप ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी पकड़ा निकल लिए. Right? How the entire house is being so neatly organized, clean, the family is being managed. आपके relatives आपको ऑफिस आवर्स में कॉल नहीं कर रहे. People are really undervaluing that leader. That's the true leader, sitting out there managing. You're managing the office. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा पूरा वर्ल्ड. अगर सोचो आप घर बैठे एक दिन के लिए, राइट, वाइफ कहीं चली जाती है, एंड इट्स बोथ वेज. आई एम नॉट जस्ट सेइंग वुमन, बट इट्स बोथ वेज, राइट. अगर वाइफ वर्किंग है और हस्बैंड नॉट वर्किंग है, तो ही विल मैनेज एवरीथिंग. सो वी नीड टू सी द लीडरशिप एट होम एज वेल, लर्न फ्रॉम आवर मदर, वैल्यू देम, राइट. बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को ऐसे ही मिल जाएंगी, राइट. बट as I said, सीखने को मिल जाएंगी. So nothing is rocket science, everything is learnable. ऐसा कोई बंदा नहीं यार मैं तो अलग बंदा हूँ, मेरे को तो सर मेरा बॉस जो है 15-15 घंटे काम कराता है, मैं तो अलग बंदा हूँ, मेरे बस की तो है नहीं. So everyone can learn these skills, बहुत easy है, right? तो वही वाली बात है कि सिखाता कौन है, सीखते कैसे हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, कितने इन्वेस्टेड आप रियली हो करने में. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हो, ध्यान दे यार शाम को 6 बजे भागना है, मूवी देखनी है, तो देन आप दो जगह एक टाइम पे नहीं हो सकते ना, आपका माइंड कहीं और, आप कहीं और. करेक्ट. That's how it works. I think what you're talking about is the mindfulness, जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक भी है, like being present where you're being, right? Yeah. और बहुत अच्छा लगा when you appreciated like our unsung heroes, I shall say. I mean these women who Yes. are running the houses, even the housewives, like even if they are not working out, it's really very brilliant how they kind of manage so many people. भाई दे आर एक्चुअली टॉकिंग, सब्जी वाले से भी बात कर रहे हैं, दूध वाले से भी मैनेज कर रहे हैं, जो आपको कपड़े धुलवाने जी उनसे भी बात हो रही है. दैट्स कि आपने डेलीगेशन किया हुआ है. दे नो व्हाट टू डेलीगेट एंड हाउ टू डेलीगेट. दे आर कम्युनिकेटिंग. आपके रिलेशंस अगर मैनेज हो रहे हैं तो वुमेन हैव टू प्ले अ मेजर रोल. आई थिंक व्हाट यू सेड इज अबाउट म्यूचुअलिज्म. गाड़ी के दो पहिए है ना, दैट्स वेरी वेल सेड. एंड जो मुझे लगता है ना दैट कॉम्प्रोमाइज, जो बहुत ही अंडररेटेड वर्ड है, यहाँ अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होता. लाइक कॉम्प्रोमाइज व्हेन यू कम टुगेदर एंड प्रॉमिस ईच अदर टू मूव अहेड इन योर लाइफ. दैट्स व्हाट द कॉम्प्रोमाइज इज, राइट. और हम उसको कहते हैं कि वी आर गिविंग अप, भाई हमने तो अपनी लाइफ ही दे दी रिलेशनशिप के लिए, बट दैट्स नॉट द केस. ये रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं तो वी आर एबल टू परफॉर्म, यू नो. अगेन वही है, इवन फॉर वुमेन और फॉर मेन. अगर घर में शांति है तो बाहर आप हीरो ही हो, लाइक यू आर किंग और क्वीन ऑफ योर प्रोफेशन इफ यू हैव अ काम एट होम. आई थिंक यू सेड वेरी वेल, लाइक बैलेंस होना चाहिए. Like there has to be balance, like when women are working or when men are working. We'll continue to the talk. I think one important question, Vachendra, though I was trying to summarize what you have discussed so far, but I really want you to share the important skills and how one can learn, because ना as you were telling, like सबको लगता है लीडरशिप के लिए पता नहीं क्या बड़ी बड़ी चीजें सीखने की जरूरत है, बट एक एसेंशियल स्किल्स है जो होने चाहिए, शायद होते भी हैं, हमको जस्ट पॉलिश करने की जरूरत है. And how can one learn? Maybe we can actually, this is what I really need to learn from you also. So what are these skills and how one can actually learn them very easily? Absolutely. Hi, am I audible? Yes. I can hear you. I hear there is a lag. Okay. So
Learning is something. इसके लिए we should definitely be looking forward for and see our leaders. See, everyone, what we do is we definitely aspire someone. हमें ना अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में हमेशा कोई लगता है कि ये बंदा पता नहीं कुछ तो अलग करता है, right? So be observant, be a seeker. What different this guy or this girl does, right? Why she is getting or he is getting all the promotions, all the hikes, सब कुछ होता है. So instead of feeling negative and I'm sorry to say jealous about the person, or who go back and ask, approach the people, right? I'll tell you, यहाँ पे ना लोग भरे पड़े हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं. People don't get up and ask. Correct. Right? People say, यार हर एक का दुकान चल रहा है. People say, यार I am growing, right? I am doing something which 95% of the population is not doing, right? So what you have to do the other way around. Think about and have at least 5 to 10 people in your life. पेन पेंसिल पकड़ो, लिखो ये कौन 10 लोग हैं जो मैं एडमायर करता हूँ, जो यार सच में लीडर्स हैं. Some people you can meet, some people you can't meet. So can't meet वाले, अब कोई बंदा जैसे I admire John Maxwell. He's sitting in US. I cannot simply say, John, can I talk to you for 2 minutes tomorrow? No, for that I'll have to be planned. I'll have to spend lakhs and lakhs of rupees each reach to him or approach him, and then finally get 2 minutes out of him. Correct. Instead, what I can do is I can go back and refer his 20, I think roughly 90 odd books he wrote already, right? Wow. And majority of them are bestsellers. So find out those leaders around you who can help you, right? On the similar lines, what I've started doing is, because I really feel this as ethical responsibility towards the organizations and towards the people around me. अब मेरे सारे जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं genuinely, I am planning to launch a course, the entry level course. There will be, I was planning to do it tomorrow, but due to some unforeseen circumstances, as we saw, technology does not support really. So I'll be doing it in the month of November itself. Wow. Look forward for this space. So it'll be a course which will tell you conceptually what leadership is, how you can learn, how can you become better in not just on the leadership areas, but other areas of your life as well. So watch out for this space for more, guys. I'll be coming back soon. Great. I think बहुत simple से examples आपने दिए हैं, and that's really good to have, like reaching out to the people जो भी 4 या 5 लोग आप admire करते हो. कुछ ऐसे बड़े लीडर्स जो एक्चुअली आउट ऑफ रीच है, तो उनकी बुक्स हम रेफर कर सकते हैं, एंड देन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर रेदर देन बीइंग जेलस. वी शुड एक्सप्लोर कि ऐसा कर क्या रहा है सामने वाला, दैट दे आर काइंड ऑफ ग्रोइंग. सर्टेनली कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे. पॉलिशिंग या वही है कि शुगर कोटिंग तो हमेशा हेल्प नहीं करती. कॉर्पोरेट में एवरीबडी इज इंटेलिजेंट इनफ, राइट? तो वो ज्यादा, और ये कॉमन है, सबको बोलना जरूर है ये बात, क्योंकि 95% लोग जो गलत कर रहे हैं ना, वो हम भी करेंगे. तो हम कहते हैं हम पहुंचेंगे 5% में, करेंगे वो जो 95% कर रहे हैं. It will never happen. Yes. I mean, मेरे को ना, I just I'm follower of John Maxwell also, and then he always, tells, it's all about equipping others. वो हमेशा कहते हैं, how much are you ready to share and how much are you ready to learn. कि journey is uphill. मुझे बहुत अच्छा कोट लगता है, it's always uphill. जो भी पढ़ा है वो ना, वो चोटी के ऊपर है. And do you think कि ऊपर uphill walk करना is easy? Never it will be. But if you are not ready to walk uphill, then तो you'll have to settle down. तो नीचे कुछ नहीं मिलने वाला. All the growth is on top shelf. So stretch yourself the more you can, and then learning is always a process. Be a great learner. I know that's what you are telling. Wonderful. That brings a very important point. Sorry, I wanted to cut short. Yesterday I was hearing a leader. So what he said is very important and very basic. उन्होंने ये बोला कि बड़ा अच्छा लगता है दूर से देखना, है ना, सब लोग यार क्या कमाल कर दिया, इसने कुछ तो अलग किया होगा. Why? As you said, uphill. जब आप हिल के टॉप पे बंदे को देखते हो, तो आपको लगता है ये तो रहा हिल के टॉप पे, आराम से पहुंच गया. वो बैक साइड में नहीं देख रहे कि वो हिल सीधी ऐसी नहीं थी. देयर वर 20, 30, 40, 50 हिल्स. नीचे खाई में गया, फिर ऊपर आया, फिर खाई में गया, फिर ऊपर आया, फिर पहुंच गया धीरे से. जब पहुंच गया तो बड़ा सुंदर लग रहा है ऊपर जाके, क्योंकि रोशनी सीधी पड़ रही है सूरज की. That's not visible. नीचे का जो उसका struggle है, that's not visible. So there was one beautiful picture ना, जिसमें the person was standing, very बहुत अच्छे से suit boot में, and then पीछे उसकी पीठ पे there were arrows. Like this is the pain he has gone through to reach the point, and then that's what the journey is. Of course, you have to pay. Like nothing comes for free. There's
always a cost associated. So either pay the cost of regret or pay the cost of hard work. So choice is yours. Well said. So wonderful conversation, Vajender. I really loved having a talk and बहुत सारी चीजें मैंने learn करी. Definitely मैंने ना अपने notes बना लिए हैं जो आपका course आने वाला है. I'm looking forward to that. I think there's a lot to learn from you, and I'm really blessed to have you here. And hopefully we'll have these sessions again for our audience. I hope everybody Absolutely. loved this conversation. मैंने तो बहुत कुछ सीखा विजेंदर से. And I'm sure gonna apply in my life, and I hope everybody else also had the same experience. Please feel Yes. free to reach out to. Yeah, whether you want to share something. So yeah, just one thing I want to mention. There's a very important element which I touched upon a little bit is your area of expertise, Mona, is the emotional intelligence. I'll tell you, बंदे भूल जाते हैं छोटी सी चीज को. सबको लगता है कि टारगेट अचीव करो आगे बढ़ जाओगे, टारगेट अचीव करो आगे बढ़ जाओगे. नो नो नो. इमोशनल इंटेलिजेंस इज सच एन इम्पोर्टेंट पीस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. Correct. राइट? विदाउट विच यू कैन नॉट सक्सीड. नो वन कैन. आपको बंदों के साथ काम करना है. कितना भी एआई आ जाए, एआई चलाने के लिए एक बंदा तो चाहिए होगा. राइट? यू हैव टू मैनेज दैट एक बंदा. बिफोर दैट यू विल मैनेज योर ओन इमोशंस, EQs, right? So that's an important element. Very well done. You are doing amazing job in that area. Thank you so much. That really helpful. I think I really love to say that you always have artificial intelligence. AI is artificial intelligence, but you can never have artificial intellect. AI as an artificial intellect can never happen. और वो तभी हो सकता है when you are emotionally balanced. सब कुछ सारे problem के solution is in here. But ये काम ही करना बंद कर जाता है when you are not emotionally balanced. And जब कभी कोई कहता है ना कि यार मैं बड़ा इमोशनल हूँ, आई डोंट नो व्हाई डू दे टेक इट कि इमोशनल होना बैड है. इमोशंस इज रियली इंपॉर्टेंट. दैट्स वन शुड टेक प्राइड ऑन इट. जस्ट दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज. किसी ने सीखा ही नहीं इन चीजों को. नाउ द साइंस इज एक्सप्लोरिंग एंड वी नो लाइक एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हियर. सो मेनी नॉट ओनली योर डे टू डे वर्क, इवन योर हेल्थ, ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जितने होते हैं, these are because of your emotional imbalance only. जितने मैक्सिमम आजकल ट्रेंडिंग डिजीजेस है राइट इन डे टू डे लाइफ. इमोशंस इस डेप्थ तक हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं और हम रियलाइज भी नहीं करते. बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स. मेरे खुद इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे बीच में. बट दीज बैलेंसिंग इमोशंस हेल्प. दैट बैलेंसिंग इमोशन हेल्प मी टू हैव गुड रिलेशनशिप. इट हेल्प मी टू ग्रो प्रोफेशनली. आई एम एट पीस वेयर एम आई एन. और अपने आप को जज करना बहुत जरूरी है. बिकॉज वंस यू आर बैलेंस देन यू कैन एक्चुअली बी अ ग्रेट लीडर. बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत नेसेसरी टूल है इमोशनल मास्टरी. और बहुत इजीली किया जा सकता है. बट ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है, जो कि आई थिंक इज एसेंशियल. सो ऑफ कोर्स लीडरशिप दे से हैज टू बी एक्सपेक्टेशन ही इस तरह से. सो एनी व्हिच वेज आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड थैंक्स फॉर sharing your valuable time. Choti Diwali pe, I think this is the beautiful gift we wanted to share with our audience. Become leader in your life. Leadership is not some skill, but it is a lifestyle. You have to learn and live by it. And that's how it becomes very simple for you. I think that's what you are a living example for that. You're living that as a leadership. As more I talk to you, more I learn from you, and I'm actually enjoying this journey with you. So, same. Thank you so very much. So, thank you everybody for joining in. The recordings will be available on our walls. Mere bhi aur Vijender ki. Feel free to connect to him on his Insta ID. He has got very good content on YouTube also. He has got very beautiful quotes that he has written. And I love the articles that he writes. His blogs, again, I think a lot to learn from him. So reach out to him whenever you feel like to connect to a great leader. And in case, of course, if you want to improve on your emotions, I am here to help you out. I love to help women and all the new people in the organizations or their earlier career level to learn the skill of emotional mastery so that they can, better perform in their life as well as in their profession. So with that, happy Diwali, everybody. We love to have you here, and let's stay connected in coming time. Absolutely. Happy Diwali, guys. Thank you so much for coming. Bye-bye. Take care. Bye. And other important aspect about mindfulness.